Hi, Dr. Saurabh. So आज हम कहाँ हैं? Where are we? Tell me. So we are at our partner lab to show the behind scene activity. So जब भी किसी पेशेंट को डेंटिस्ट की विजिट करना होता है तो बीच में एक ऐसा फेज आता है जब डेंटिस्ट बोलते हैं कि अब अगली अपॉइंटमेंट जो है वो 2 से 3 दिन बाद होगा एंड मीनवाइल आपका काम जो है लैब में बनने जाएगा. दो पेशेंट्स आर ऑलमोस्ट क्लूलेस कि क्या होगा इस टेन्योर में. जैसे लाइक वी गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर हैविंग ए कॉफ़ी, फॉर हैविंग ए सैंडविच, so we know what all will be happening meanwhile, that yes, they must be toasting the sandwich, they must be brewing the coffee in the in between tenure. So here we are here to make patient understand that what all happens in the time meanwhile और behind the scene activities क्या हैं, क्यों इतना टाइम लगता है और उसमें क्या क्या predictabilities हैं. और किसी किसी टाइम ऐसा भी होता है कि डेंटिस्ट के ऑफिस से कॉल आता है कि नहीं सर आपका अपॉइंटमेंट एक दिन डिले करना पड़ेगा. वो अनप्रिडिक्टेबिलिटीज कब और कैसे आ जाती हैं लैब वर्क्स में, दिस इज व्हाट वी आर हियर टू डिस्कस एंड डिस्प्ले एज वेल. Patient information is the main motive here. So here we are talking about the steps involved Yes. at the back end Yes. and also the time involved, Yes. particularly for the patients who need urgent kind of work, Yes. so that they should know that what kind of precision is involved and what kind of detailing is involved in the kind of work that we deliver. So this is to educate the patient कि hasteness is not the key. If they need good work, precision work, so this is for them. So क्या होता है, बहुत बार पेशेंट ऐसे बोलता है कि डॉक्टर साहब जल्दी दे दो अपॉइंटमेंट, मैंने जाना है, मेरी फ्लाइट है. उन्हें सिर्फ ये लग रहा होता है कि एक क्यू है और उसमें मुझे लगा रखा है और Yeah. मैं जब ऐसी रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्यू से आगे ले आएंगे और मेरी अपॉइंटमेंट जल्दी हो जाएगी. तो ऐसी सिचुएशन में मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि जब आपको एंटीबायोटिक डोज दी जाती है तो आपको पता है कि एक मॉर्निंग लेनी है और एक इवनिंग लेनी है. ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में 2 ले लिया और इवनिंग में 2 ले लिया तो 2 दिन का एंटीबायोटिक फिनिश हो गया. सेम वे it's in a very planned fashion and we are compelled to follow all the steps to ensure longevity of the crowns or whatever prosthesis you are getting from the partner labs. Yeah, and also it requires professional ethics also to deliver such a work. Yes. So I guess people should know more about it. Yes. कि what absolutely. kind of precision, what kind of labs are required to give such a work. Let's join us for the information tour where we will explain what all happens behind the scenes for making of a crown, for making of a denture, for making of a night guard or retainer, or what all lab work happens at the labs. Come. So we are at the first station where impression pouring happens. First step is lab receives impression. Patient का नाप लेके आता है डॉक्टर से. नॉर्मली डॉक्टर जो है एक च्युइंग गम लाइक मटेरियल यूज़ करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे इसके अंदर बाइट करो और उससे इम्प्रिंट आ जाते हैं. उसको हम स्टोन से उसका नेगेटिव रेप्लिका से पॉजिटिव बना देते हैं. But Dr. Saurabh, these days we are doing the intraoral 3D scan. Yes. So talk about that. So intraoral scan is nothing, just a group of around 4-5,000 pictures clicked with the intraoral scanner and then arranged in 3D, जिसकी फाइल आपके डेंटिस्ट से आपकी लैब में ट्रांसफ़र कर दी जाती है एंड देन फ्रॉम दैट लैब ट्रांसफर्ड फाइल दे कैन वेरी इजीली गो अहेड विद द प्रिंटिंग ऑफ द मॉडल. सो आपका बिल्कुल रेप्लिका 3D प्रिंटेड मॉडल इनके पास अवेलेबल हो जाता है. उसमें कम्बरसम इम्प्रेशन मेकिंग जिसमें पेशेंट को वॉमिटिंग भी आ सकती है और वो मटेरियल बहुत मेसी रहता है, प्लस लैब को इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाता है आपका मेजरमेंट, आपका मॉडल. This is the advantage And of also the time intraoral. saving. I remember earlier we used to drop our lab work to the airport and then from further there used to go by the flights. Yes, if from Delhi आप किसी अच्छी लैब में अगर बाहर काम भेज रहे हैं, लाइक कुछ क्राउन्स तो ऐसे हैं जो यहाँ से स्वीडन भेजने पड़ते हैं, तो वो पहुँचने में ही 2 हफ्ते 10 दिन बड़े आराम से ट्रांसपोर्टेशन में लग जाते हैं. नाउ जस्ट विद ए क्लिक यू कैन इजीली सेंड द फाइल. So it saves lot of time. यस एब्सोल्युटली, डेफिनेटली. Yeah. और लैब के पास जैसे ही इम्प्रेशन पहुंच जाता है और मॉडल मेकिंग होती है तो उसको लैब इस तरह से एक अच्छा सा मॉडल प्रिपेयर कर लेता है जिसकी रिफाइनमेंट करने के बाद या कभी-कभी किसी स्टेप में डाई कटिंग भी की जाती है. And वो also to करने- block the deep undercuts. Yes. So after all the processing, work goes to the place where the designing of the prosthesis happen. अगर आपका कैप बनना है तो उसकी डिजाइनिंग होती है. So Dr. Saurabh, talk about the ExoCAD and HTML file.
Talk about it. So basically this is a STL file which gets transferred to the lab from the dentist office, and then on this file with the exocad software designing is done. Let's say इस दांत के ऊपर आपका कैप बनना है, तो इसके ऊपर सबसे पहले जो टेक्नीशियन है, तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, बिकॉज आपका कैप कैसा बन के आएगा इसको highlight. वो निर्धारित इसी चीज़ पे होगा. सो जैसे ही हम इसको अगर जूम करके देखेंगे, सो डेंटिस्ट जो कर रहे हैं काम, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये एरिया. The margin. This is called the finish line, the margin. So this is the most important aspect apart from the reduction. और इसके बाद लैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिडक्शन को चेक करे. अगर वो रिडक्शन उसको सेटिस्फैक्ट्री लग रही है तो लैब उसके ऊपर कैप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले डिज़ाइनिंग करती है. डिज़ाइनिंग का फर्स्ट रूल ये होगा कि अगर आपने लेफ्ट साइड का कैप बनाना है तो वो राइट साइड का मिरर इमेज होना ज़रूरी है. मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि क्या डॉक्टर्स ने इंस्ट्रक्शन दी है पेशेंट से डिस्कशन करने के बाद, एंड अकॉर्डिंगली फिर फैब्रिकेशन वैसा किया जाता है. So this CAD file shows the entire 3D view on which the technician is working. Absolutely, absolutely. So here you can very clearly see this is a back tooth. ये पीछे का दांत है. तो जैसे ही खाने चबाने के दांत बनाए जाते हैं तो उसमें इंटरडिजिटेशन का मतलब है जो ऊपर और नीचे के दांत हैं वो एक दूसरे में प्रॉपरली फिट आने चाहिए. सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इंटरकस्पेशंस हैज़ टू मैच विद द अपोजिंग टूथ. जैसे ये बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, इसकी एनेटमी, इसकी जो शेप है वो नीचे के दांत से मुताबिक बनाई जाती है ताकि प्रॉपर च्यूइंग कर ली जाए, पेशेंट खाना चबाना प्रॉपर कर सके. So they receive the scan here on the exocad software, और यहाँ पे they get the full view of the tooth. Yes, it's a 360 degree view. Everything very easily they can visualize. अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से. जैसे मैं इनको बोलूँगा कि एक बार अंदर की तरफ से दिखाएंगे कि हमारा दांत अंदर से कैसा बनेगा और बाहर से कैसा बनेगा. ऑन दिस स्क्रीन वी कैन सी बैक टूथ फॉर्मिंग. पीछे का कैप बन रहा है, तो पीछे के कैप की डिज़ाइनिंग हो रही है. टॉप सरफेस जो कि च्यूइंग सरफेस है जिससे पेशेंट ने खाना है, चबाना है, दैट हैज़ टू मैच विद द अपोजिंग टूथ सरफेस. जो ऊपर का दांत है वो नीचे से बिल्कुल मैच करेगा, तभी पेशेंट एफिशिएंटली खाना चबा पाएगा. और ये प्रॉपर च्यूइंग एफिशिएंसी तभी आएगी अगर ये डिज़ाइनिंग इस टाइम प्रॉपर तरीके से करी जाएगी. इसके अलावा राइट और लेफ्ट अगर स्पेस बच जाएगा तो खाना फंसने के चांसेस भी रहेंगे. दिस ऑल हैज़ टू बी टेकन केयर इन द डिज़ाइनिंग. So this is the most crucial platform here. Yes, it's like this is the painting which has to be conceptualized in total. Like this is almost the finishing of the designing of the front central incisor, आगे का दांत. ये पीछे का मोलर है, खाने चबाने का दांत पीछे का. यहाँ दो एडजेसेंट क्राउन है, ये भी चबाने के पीछे के दांत हैं. इसमें डेंटिस्ट को बताना पड़ता है कि मुझे दोनों क्राउन जुड़े हुए चाहिए, जिसको हम जॉइंट क्राउन्स बोलते हैं, या दोनों इंडिविजुअल चाहिए, सेपरेट होगा तो पेशेंट प्रॉपरली वहाँ फ्लॉसिंग भी कर पाएगा. यहाँ जो डिज़ाइन चल रहा है ये अगेन एंटीरियर का दांत है, आगे का दांत है. यहाँ पे एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ की जा रही है. जो हमने मॉडल्स मैनुअल तरीके से डॉक्टर ने लेके मॉडल्स भेजे हुए हैं, उनकी यहाँ स्कैनिंग की जाती है और उनकी एक STL फाइल बना ली जाती है. So this is in front of you a Medit scanner where a physical model sent by a dentist is being scanned. डेंटिस्ट जैसे आपके इम्प्रेशन लेते हैं, नाप लेते हैं, उस मॉडल को डाई स्टोन से या डेंटल स्टोन से पोर कर लिया जाता है. फिर उससे जो मॉडल बनता है अब उसको 3D में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको STL फाइल में कन्वर्ट किया जा रहा है. इन अदर वर्ड्स कि आपने कोई डॉक्यूमेंट हाथ से लिखा, उसको डिजिटलाइज करने के लिए आपके लैब द्वारा इसकी स्कैनिंग की जा रही है. सो स्कैन करने के बाद लैब विल गेट ए STL फाइल जिस पे फर्दर डिजाइनिंग की जा सकती है. So this is a 3D printing room, Dr. Saurabh. The STL file that we receive from there to here. So from here we place the command and this machine gets a command and it prints this. So this is the resin used for the
model making. The grey resin used for the model. Yeah. So this is the model preparation going on. Yes. So at a time we can place, I think, 4 models, 4 full models we can prepare. मतलब अगर ये ऑर्थो मॉडल चल रहा है हमारा, so we can prepare 4 full models into this. Yes. Yes. And then give us little more information about the PMMA crowns. Yeah. Those are the semi-permanent crowns. Yeah. So we Temporary have crowns. Yeah. So we have 3 shades in this: A1, A2, A3, Yes. and If you can show the resin. yeah, something like. So it's a pre-mix of the shade of A1, A2, A3, and we put it in the tray, and this entire tray goes to this place, and then it goes with the fabrication of the temporary crowns. Again, those crowns are first designed the outside at the CAD center. this is the PMMA crown. So Dr. अब Poonam, अब model मॉडल बन बन गया गया। है, कैप बनना बाकी है. हम मिलिंग रूम में चलते हैं. So what happens exactly in the milling room? So this is our milling room. हमारे ये blocks हैं, something like these. ये zirconia blocks, platinum blocks, PMMA. So इन blocks को हम यहाँ पर place करते हैं इन machines में, और इनके साथ हमारे crowns मिल होते हैं. तो सबसे पहले इन ब्लॉक्स को डिजाइनिंग करके एक ब्लॉक से करीब 15 से 20 कैप क्राउन्स या कैप्स बनाए जा सकते हैं. तो अभी हमारा मेन मोटिव जो रहता है वो ब्लॉक के अंदर से कैप्स को मिल करना रहता है. सो बेसिकली आप समझे कि जो हमने सबसे पहले डिज़ाइन कैप्चर किया उसके मुताबिक हम ब्लॉक को मिल कर देते हैं. सो दीज आर द मॉन्स्टर मशीन्स जो क्राउन्स की मिलिंग करती है, जर्कोनिया ब्लॉक्स की मिलिंग करती है. मिलिंग हो जाने के बाद जर्कोनिया के जो ब्लॉक्स हैं वो कुछ इस तरह के नज़र आते हैं. So after the mill crown, this is the process of dipping. So in dipping we have different shades. Something like this. और इस डिपिंग के बाद हम लेकर जाते हैं अपने क्राउन्स को सिंटरिंग के लिए. सो डिपिंग के बाद हेयर कम्स अ क्राउन फॉर द प्री ड्राइंग प्रोसेस, राइट. फ्रॉम द प्री ड्राइंग it goes to the main furnace for the sintering. So from that pre-drying process it comes to the main sintering process into our furnace. So this is a furnace. So agar up to 6 units hai, so it takes around 5 to 6 hours in the furnace. Let's say full mouth is there, more than 6 units. If it's joint and more than 6 or full mouth, then around 12 to 14 hours time into the furnace. That makes a crown in a day just feasible. कि अर्ली मॉर्निंग अगर सुबह 8 बजे स्टार्ट कर दिया तो रात को 8 बजे तक क्राउन्स बन But जाएंगे. I guess full mouth will take longer time, क्योंकि then if it's not furnace properly, the layers won't show up, and So ultimately at least one day time for a crown fabrication is what we normally are able to commit to the patient. maybe, but with the full mouth cases I would say little more. Little more than that. Yeah, Yes, for the precision. a single crown can be given in overnight Yeah, single times. crown we can deliver. Yes. But in case of the full mouth cases, more than 6 units, joint, Yes. this is important. So this is for overseas patients, especially coming to India to get dental treatment done. We can commit you one day crown for sure, but if more than that, then ensure you have time so that we be able to deliver you proper work. Yeah. So after the sintering process, this is a crown for the layering. So there are different shades of layering. So this is the real artist work that involves precision and technical eye. That's a real job that he's doing. So this is the artist's hand that will ultimately go into the patient's mouth and will show up. So earlier what we were doing was the scaffolding. Now this is the Eiffel Tower that will come into play. Yeah, this is what will actually show. So he's our real artist. This is the step which gives
a crown or a prosthesis a lifelike appearance. This is where we mimic natural. This is where we make it cosmetically pleasing. So the basis of cosmetic smile designing is what has been getting done now. So this is what all we deliver to the patient. This is what all is visible. This is what all one patient has to live throughout his life. So this is the most important and crucial step in the fabrication of the prosthesis. So patients should know that if we do any hasteness in this step, It is going to cost lifelong. yeah, The compromised aesthetics. yeah. So after this, it goes to this Ceramic ceramic furnace. So after the layering, it goes to the ceramic furnace. This is the start of the process. So after the layering, it goes to the ceramic furnace. And after the ceramic furnace, now this is the time where we give the curves to the Yeah. The processes, the contouring part. So after the contouring, if there are changes made, it goes back again to the layering part. Then furnace again. So after the contouring, it goes into the glazing. That's a final step. The glazing cycle just got over in this case, where the shine on the top of the ceramic is very clearly visible. So after the glazing, this is the final step in which she is the quality control person. So she checks everything. Yeah, and then goes the billing part. So now that we have gone through the steps and the time involved in the detailing and the precision work and the time sensitive machines of the furnace, of the mill. So now what advice you think we should give to our patients who ask for the immediate treatment or give the work in 4 hours or 6 hours of time, or for the patients whom we recall for the repeated scan, not like most of the patients, but yes, out of 1,000, if I would say one patient we recall for some error that's happening at the back end here with the machine or for the STL file. So what advice you have for that? See, as a prosthodontist, my advice would be, first of all, one shall not fall for cheap work. This is something which is going to stay lifelong in your mouth. So you shall ensure state-of-art laboratory, a lab which is of good certifications. That is the first thing which your dentist has to choose. You have to ensure that you are not falling for a dentist who is running behind cheap places, where cheap labs, where any substandard material is being delivered. So a good dentist with good specialization should be one of the primary motive behind deciding this. Apart from that, you shall never pressurize your dentist to deliver it sooner than later. Dentist himself wants to conclude the work sooner than any other thing. So one shall not pressurize dentist, or for the matter of fact, dentist also shall not pressurize lab to deliver the work sooner than the timeline which is mandatory to be followed. Because as we try to hasten up the process, we end up getting something which may fracture sooner, which may have a breakdown, which may have a craze line, which may have a internal stress fracture lines. So all those things in the end will deliver something which will be inevitable, and helplessly the processes will require redoing again. So the best bet to place is good material, like the partner lab that we work with. They are with the German zirconias. So here categorically we are talking about zirconias because that is most sought for crowns these days. There are other options also. Metal ceramic crowns are there, DMLS crowns are there. We may discuss it in some other time with maybe some other lab partner as well. But right now what we have to discuss is what this current lab partner is delivering is German zirconia, which for sure has been tried tested by our clinic as well for a good long time, and they have served the best. Yeah. So we would like to conclude our trip with this big thanks to the lab and to all the staff members.
Main motive behind all this is to educate patient about what happens behind the scene and why it takes time and why are your dentist keen about letting lab spend that time in work. Thank you very much. Thanks to one and all. Now that we are back from the lab tour, so what do you think? What more we can talk about? In fact, we shall ask our patients what kind of info they seek for more explanations. So, From behind the scenes. From behind the scenes, what they want to understand more, whether they are more interested in understanding the equipments or they machines, or they want to understand more about maybe the price structure. Yes. And also the types of crown, I guess. Yes. Because in our practice, most of the questions are the type of the crowns, yes, and the pricing, and also the warranties that we offer, yes, to our patients. So lots of overseas patients, before deciding to come down to India, they want to have a tentative budget of the complete treatment. So what next we will be coming up with is about the cost detailings, about different options of possible, feasible, so that they can have different kinds of treatment plan. Plan A, which is a reasonable plan, Plan B, which is a premium plan, and Plan C, which is a totally secured plan in which work warranties are given. And also it has to be budget friendly to all strata of patients. Absolutely, absolutely. Point very well taken. In fact, the ethos of Matrix has always been that we offer treatments which are affordable and with good amount of cost transparency as well. Yeah. And does it mean the economy line draws a line that this doesn't serve the quality? No, not at all. We own responsibility of what all has been done at Matrix. Yeah, be it Be economical, the cheapest possible one, yeah, be it be the premium level ones. All are our responsibility. That yes, the premium ones are served with expensive materials, what all recent developments have taken over. We try to incorporate all those things in those plans. And also I think the sourcing of the material. Yes. Like there are certain brands like German brands, Sweden based brands, yes, that we can offer to the little expensive range that we have in our clinical practice. We have always done that. We have always done that, and there are different kinds of patients with different kinds of demands. Yeah, but the quality is not compromised. Absolutely not at all. So I guess we should ask our now patients what all they need to ask. Yes, so please do comment, do send us emails asking what all info you seek from our end. Yeah. With this note, we would like to thank you all. Thank you very much. Thank you.